अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक और आज अक्टूबर 25 है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो हमारे जितने भी व्यूअर्स जो हमें देखते हैं, ख़ास तौर पे इंडियन व्यूअर्स हमारे जो हैं, उनको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल दिवाली थी एंड आई होप दे हैड अ ग्रेट दिवाली इन कैनेडा और ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचती है वहाँ वहाँ तक उन सब के लिए नेक तमन्नाएँ। और जैसे आपको इल्म है कि कल 24 अक्टूबर था और हमारे यहाँ मंडे था। इलेक्शन का जो एक माहौल था वो भी अब ख़त्म हुआ और बहुत सारे लोग जो कि इस इलेक्शन में खड़े थे, रिज़ल्ट्स उसके आ चुके हैं। उस हवाले से भी आज हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ राना सुहेल होंगे, उनसे हम थोड़ी सी ज़रा इनसाइड, चूँकि वो अखबार निकालते हैं, उनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है सारी डिटेल से, राइडिंग्स के हवाले से, तो उनसे भी बात करेंगे आगे चल के। और मेरी कोशिश होगी कि कुछ हमारे जो कैंडिडेट हैं उनसे हम टेलीफोन पे भी बात करके उनको मुबारकबाद भी दें और उनसे थोड़ा सा हम इनसाइट भी लें उनकी विनिंग के हवाले से। उनका जो कल का दिन था कैसा रहा, उनकी पूरी कैंपेन कैसी रही, इस हवाले से समीरा अली मिल्टन से वो रीजनल काउंसिल की सीट जो थी वार्ड 4 की, वो जीत गई हैं। और दूसरी बात ये कि मिल्टन के जो मेयर थे गॉर्डन क्रैंस, वो भी अपनी सीट उन्होंने बरकरार रखी, तो ही इज़ बैक एज ए मेयर। ब्रैम्पटन में जो पैट्रिक ब्राउन थे वो एक लार्ज मार्जिन के साथ जीते हैं। सुनने में तो जनरली यही आ रहा था कि कंपटीशन जो था बड़ा स्ट्रॉन्ग था और दो कैंडिडेट भी थे मेयर के लिए, बट ही बिकेम विक्टोरियस। और जॉन टोरी जो हैं, ही आल्सो बिकेम द मेयर ऑफ टोरंटो अगेन। और बॉनी क्रॉम्बी जो हैं, शी वन द थर्ड टाइम कंसेक्टिव टर्म ऑफ मिसिसागा मेयर एज वेल। सिमिलरली जॉन टोरी जो हैं वो भी थर्ड कंसेक्टिव ईयर उन्होंने जीता है टाइम, एंड ही इज़ मेयर अगेन फॉर टोरंटो एज वेल। और बहुत कुछ स्कूल ट्रस्टीज़ हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और कुछ नए काउंसलर्स जो हैं जिनको कुछ सीट्स मिली हैं, उस हवाले से भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली ये कि मैं बड़ा आज दुखी हूँ, और ख़ास तौर पे अर्शद शरीफ साहब का ये जो वाक़या पेश आया है, पाकिस्तान के एक अजीम जर्नलिस्ट जो कीनिया में, जिनको गन डाउन कर दिया गया और वो वहाँ शहीद हो गए। 22 फरवरी 1973 को वो पैदा हुए कराची में, और 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में उनकी शहादत हुई है। वेरी सैड थिंग। पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त वो बहुत गमगीन है। और इवन दो कि जब आप किसी को जानते भी नहीं हैं, लेकिन आप उनको टेलीविज़न पे देखते हैं, आपका उनके साथ एक राब्ता बन जाता है, एक सेंटिमेंट डेवलप हो जाते हैं। और व्हेन यू हियर समथिंग लाइक दिस, सो यू फील वेरी सैड। और ख़ास तौर पे ये जिस तरह हुआ है और जिस तरह इसकी ख़बरें आ रही हैं, इट्स लुक्स लाइक अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और जैसे इसको किया गया है, स्नाइपर से शूटिंग हुई है, उनकी गाड़ी को ख़ास तौर पे जो है वो एप्रीहेंड किया गया और वहाँ पर उनको मारा गया। और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और उनके 5 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। उनकी जो बेगम है, उनका नाम जवेरिया सदीकी हैं, और 49 इयर्स की एज थी अरशद शरीफ साहब की। इनके एक भाई मेजर अशरफ शरीफ जो हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। फादर भी नहीं हैं, तो वालदा भी उनकी बड़ी गमगीन हैं, और घर में और कोई मर्द नहीं है। तो इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग दैट व्हाट हैज़ हैपेंड। पाकिस्तान के अंदर जो जनरली सियासत है वो बड़ी डिबेटेबल है कि वहाँ पर जिस तरह लोगों को ट्रीट किया जाता है और जिस तरह लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है पाकिस्तान में, इट इज़
जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, जो ह्यूमन राइट्स फाउंडेशंस हैं पूरी दुनिया में, उनको इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और ये एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी डिबेट होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए और इनका सदबाब जो है वो होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री थी उनके पास और अल्स्टर यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया था। एक बहुत मंजे हुए और वेल लाइक्ड जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान अर्शद शरीफ ने अपना बहुत सारा जो वक्त ARY और दुनिया न्यूज़ और दूसरे चैनल के साथ गुजारा, लेकिन कुछ अरसे से 1-1.5 महीने से 2 महीने से पाकिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल थी उसके अंदर जो उनकी जो रिपोर्टिंग थी, उनको जिस तरह टारगेट किया जा रहा था, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे बनाए जा रहे थे, ही हैड टू लीव पाकिस्तान। ही वॉज़ स्टेइंग इन UAE फॉर सम टाइम और वहाँ से भी उनको काफ़ी थ्रेटन किया गया कि आप UAE को छोड़ दें। उसके बाद वो वहाँ से आई बिलीव कीनिया चले गए। तो आई मीन इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि पाकिस्तान में और भी इस तरह के कुछ जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर रहने पे मजबूर हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट और मीडिया में रहते हुए मैं समझता हूँ कि ये हमारे इदारों की नाकामी है और हमारी गवर्नमेंट जो हैं उनको इस पे सोचना चाहिए कि इस तरह के ये वो लोग हैं जो कि सच और हक़ की बात हर वक्त करना चाहते हैं और करते हैं, और उनकी आवाज़ को बंद करना जो है वो ठीक नहीं है। और तो मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे ये पता चला। मैं एक इवेंट पे था, उसको हम होस्ट कर रहे थे और जहाँ जो खबर आई, सो इट्स पिछले 2 दिनों से वी फेल्ट लाइक ही वॉज अ पार्ट ऑफ अस, ही वॉज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एज अ ब्रदर, and we lost a valuable brother in our family। ऐसा हमें फील हुआ। so because of that पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा गमगीन है और इमरान ख़ान ने भी बड़ी खुल के इसके ऊपर बात की। पाकिस्तान का मीडिया जो है, जो आज़ाद मीडिया है, वो बड़ा खुल के बात कर रहा है उनके इस मर्डर के ऊपर। आगे चल के थोड़ी सी हम बात करेंगे राना सोहेल साहब के साथ इन रिगार्ड्स टू जो यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं और जो उनका आउटकम हुआ है, कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी हमारे लोगों की यहाँ पर। और जैसे कि आपको इल्म है कि बहुत सारे लोग जो थे वो मुख्तलिफ़ राइडिंग से काउंसलर्स की सीट्स के लिए, स्कूल ट्रस्टीज़ की सीट्स के लिए लड़ रहे थे। और हमारे पास भी पिछले चंद हफ्तों के अंदर जब से हमने अपनी म्यूनसिपल इलेक्शन की कैंपेन शुरू की थी, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ भी आते रहे और यहाँ आके बात भी करते रहे। मेयर मिल्टन के जो हैं गॉर्डन ग्रैंड्स, ही वाज विद अस, पैट्रिक ब्राउन वाज विद अस इन द स्टूडियोज़। बहुत सारे रीजनल काउंसलर्स जो हैं वो भी आते रहे, कैंडिडेट्स भी आते रहे, स्कूल ट्रस्टीज भी आते रहे। और बट ये है कि ये इलेक्शन ऐसा होता है कि ये पार्टी इलेक्शन नहीं होता, इस इंडिविजुअलिटी इलेक्शंस होते हैं। तो उसके लिए आपका उस कम्युनिटी में रहते हुए आपकी जो वर्किंग है वो कितनी स्ट्रांग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर आपको वोट मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कनेक्ट करते हैं अपने जर्नलिस्ट को, राना सोहेल साहब को, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और 1-1.5 मिनट के ब्रेक पे जाते हैं एंड वी विल कनेक्ट विद हिम and then we will talk to him in regards to detail about the outcome of the municipal elections in Toronto, in Ontario actually, पूरे ओंटारियो के अंदर हुए हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन के लाइव नशरियात अंजुम मलिक के साथ, एंड विल कम बैक टू यू इन अबाउट 2 to 3 minutes टाइम। थैंक यू। I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect.
Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with Asfar Tahir, your full-time realtor for life. For all your tax and accounting consulting needs, call Waris Shah, your own tax and accounting consultant. Based in Mississauga, call now 905-232-7829. Hi, this is Sharif Sabawi, your MPP of Mississauga Inlands. It is my honor to represent the people of Mississauga Inlands. Since taking the office, I have been doing my best to help individuals, families, and businesses right here in Mississauga. During the pandemic, the government of Ontario has worked very hard to save lives, keep Ontarians healthy, and sustain small businesses that were experiencing hardship due to the lockdown. Then, now, and always, I promise to be the voice of my riding. If you have any problem, issue, concern, or question, please contact my office anytime. I will be more than happy to meet with you and discuss any concerns you might have. Even if we can't solve your problem, we will tell you where to go to get some help. Your MPP, Sharif Sabawi. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की नशरियात और मेरे साथ हैं लाइन के ऊपर आवर बिलवड मेयर फ्रॉम मिसिसागा Bonnie Crombie, and for a third consecutive time she has won the mandate with the majority. Very good evening to you, Bonnie. Thank you so much. I guess it's a hat trick. It is a hat trick, Bonnie. It is. No, I honestly tell you that you remember that the last time you were running for elections 4 years ago, we sat down one-on-one and we discussed regarding your accomplishments. But I want to take this opportunity today, Bonnie, to just ask you a couple of things very importantly. In the past 4 years,
since you last became the mayor of Mississauga and now, what do you think that some of the things that you wanted to accomplish, you managed to do it, and then what is in the future that you have lined up for Mississaugans? So that's an excellent question. You know, I think the highlights of my tenure as mayor include building public transit, whether it's our LRT and getting it fully funded by the provincial government, bus rapid transit on our transitway on Dundas and now on Lakeshore, and then building complete communities and sustainable communities, like the communities we're building on the waterfront that are reclaimed brownfield. One was a power plant, the other one was oil refinery, and we're building a kind of community where you could live there, work there, run all your errands, go to the grocery store, kids go to school, have all your recreation there, and never leave. We're building a livable, walkable city with complete communities. And this is a complete different orientation in Mississauga. I want less use of the car, more emphasis on walking, more emphasis on complete communities. And we're maturing as a city. You see, our downtown is becoming very urban. We have a lot of high towers and more to come. There's more than 50 towers planned in the next 30 years. Walkable downtown that's complete with art galleries and cafes and restaurants and places to shop. And I think Mississauga is evolving and transforming into an innovative city for the future. And we are a destination. I continue to attract investment here. Even during COVID, when we were in lockdown, I continue to attract 2,000 new businesses and over 13,500 new jobs. So I feel that this is the role of the mayor to set the vision for the city along with council, working in conjunction and collaboration with the community, continue to attract investment and ensure that transit is built at the same time that new developments are. Oh no, that's a good worksheet, Mayor Bonnie. What I wanted to ask you is importantly, a couple of things, very importantly as well today. And the first thing first is, in regards to the crime that you've been trying to tackle in Mississauga for the last 4 years, the new hiring that you want to do, with the Peel Police Division, more officers to be added on. As you know, there have been a lot of carjackings and all that. No, so what I'm trying to make a point: safety and security of the Mississaugan residents. How do you foresee that in the coming days and months and years? What are the plans in place that you have that it will eliminate these problems? So this is an excellent question, and of course, my city's safety, security, well-being is primary. We are one of the, and we continue to be one of the safest cities statistically speaking. Yeah. Now, have we had incidents where there's crime or hate crime or carjacking? Yes, we have. Some of it has been a crime that began in Mississauga but was not isolated to Mississauga and was more random. Others is very specific, and these are some of the growing pains of maturing as a city. But the good news is we have a brilliant new, very dynamic police chief who is employing different methods of policing, because let's be honest, we can't have a police officer in every corner. More innovation, more technology to help solve crime. And Peel Regional Police has some of the highest solvency rates of crime in the entire country. They're engaged by other police services to help them solve their crimes. So this makes me very proud. Now, you spoke about carjacking, and of course, this is a problem, and it was heightened during COVID because cars were being stolen not only for export, but also to break down for parts. Because of course we know there were supply chain issues. You couldn't get electronic parts. You couldn't get any parts. And so we saw a rash of more carjackings than we had in the past. And so here at Peel Police, and as you know, I sit on the police board. Yep.
we created a task force and a committee to analyze the problem and to work on it. And what we found is we need to bring all the stakeholders together. The car manufacturers are not as easily stolen and broken into, and the insurers who have to insure these vehicles to ensure from their end everything is being done. Canada Border Services, because when a car is stolen, if it's being stolen for export, well, export containers are checked on the way into the country to ensure that they are what they say they are, but not on the export side. So we need containers to be checked and monitored to see what's being exported as well, the random checks that are done. Because right now, once your car is placed in one of those containers, the signal is lost, and you will not see that car again until it's exported to some, to the developing world or the Middle East, wherever they're sent. Yeah. So this is something we've taken very seriously and to address. And the other issue is hate crimes, and every city, we are not immune to that. Of course, it always brings me grief and angst when this happens, and it's just very important that we stand together as a city, as a community, to stand up to this, because it's not acceptable. It's not acceptable, no matter who does it. And we just tell them that there's no place for intolerance in Mississauga, and we stand together shoulder to shoulder, because we are a very diverse community, but we also celebrate each other. We just finished the Jewish holidays, and today's Diwali, and we all know it's Shuk Diwali and Bandichor Divas. I mean, we all know these words, Eid Mubarak, Merry Christmas, because we are that community that celebrates along with each other. So, that makes me very proud that we have this very resilient and embracing, inclusive city as well. Mayor Bonnie, I see that you have some new members that have been not sworn in yet, but they won yesterday, some of the new councillors, and some of them people did not run. So who are your new teammates now from Yes, Mississauga? let me introduce them, and I'm very, very proud that we now have more younger and more diverse people on our council. Of course, Deepika Demirla was re-elected, and she's South Asian background, from Gujarati from India, and she represented the diversity. Many others were either Anglo-Saxon or Polish-Ukrainian by background, and Nando had been Italian. But so now we have more diversity. So in Ward 2, to replace Councillor Karen Ras, who resigned, we have Alvin Tejo, who is Indonesian by background, and a young guy, he's in his 30s. In Ward 8, Ward 8 is Matt Mahoney. Ward 9 is a Black community member, business owner, fitness business, Martin Reed, and he was a member of my mayor's Black Advisory Council, so that makes me very, very proud. And in Ward 11, Brad Butt, who was former member of Parliament, also with the Board of Trade, so business background in Streetsville. And then we have a new councillor in Ward 6, and his name is Joe Hornick, and he is a banker by training, also a young guy. These guys are all in their 30s or 40s, that makes me very pleased, and it brings down the average age of our council quite substantially and increases the diversity. And Joe will be a great addition to the budget discussions, because he is a former banker. Mayor Bonnie, how many regional councillors and how many councillors now on your portal now in Mississauga? We in the mayor, so we're 12. Okay. Brampton has 9, and Caledon now has 3, because there was a time when Caledon had 5, and we cut them back to 3. 2 in the mayor, they have a new mayor there as well, and many new councillors. And we gave those seats to Brampton, because Brampton was underrepresented. So from 7 seats, they've gone to 9. Okay. One of the other questions that I have for you, Mayor Bonnie, is how after the COVID we are back now, and it's so hard. The real estate has been, as you know, that it was so hard for people to afford housings. And what are in the plans with you, with the Premier and yourself, for in Mississauga area? Do you have any lots left where where you think that the builders can do some subsidized housing, or you can add some more projects over there so the people could
afford the So first-time this home is a buyers? great question, and of course the focus of the election was on housing and housing affordability in particular, because I mentioned I wanted to attract jobs here, but it's very important to me that people not only work here, but they live here, and they can live here for generations, because I want my children to stay in Mississauga as well. So housing affordability is an issue not only right across the province, but right across the country, and you see that the Premier is tackling the housing issue. He thinks it's a supply issue. I think it's an affordability issue. Nonetheless, we need to get more housing built. So we have a plan. We had a plan called Making Room for the Middle to help incentivize the building of more either purpose-built rental or housing that's specific, that would accommodate middle-income people. And we had a plan to have the province and the federal government provide incentives such as surplus land being sold at a reduced rate so that affordable housing could be built, or long-term care, seniors care could be built, and that's very vital and necessary in our city as well. And the federal government has provided the Housing Accelerator to help us build more modular housing and housing. They've given some grants to cities to do that, but I would say in Mississauga, I don't know about the case in Brampton or Caledon or Markham or Vaughan, but we don't have land anymore. Yeah. All our land is privately held, but there are parcels. There are parcels that the provincial government owns, maybe even a few federal parcels, that we have asked them to please sell this, not at market rate, but less. If we can get a developer to make a commitment to building affordable housing or a long-term care or seniors housing on that land. Okay, Mehrbani, I know you at a restaurant today. I'm so thankful for your valuable time. Thank you so much. Yes, we're having a little celebration. I look forward having you at the studio. Yeah, I look forward having you at the studios. And I'm honored that the people of Mississauga have shown their confidence in me one more time. Lot more years to come. Lot more years to come, Mehrbani. Thank you so much for having me today. Thank you, Mayor. Thank you. Bye-bye. व्यूअर्स ये थी हमारे साथ मेयर बानी क्राम्बी फ्रॉम मिसिसागा, और आपकी बहुत सारी कॉल्स बीच में आ रही होती हैं और जब हम बात नहीं कर पाते इसलिए बिकॉज आई डिडंट वांट टू डिस्कनेक्ट विद हर, और बट इट्स गुड दैट यू गाइज आर वाचिंग अस एंड यू आर कॉलिंग अस सो मच ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्जेशन. हमारे साथ 1-2 मिनट के बाद राना सुहेल साहब होंगे, हम उनसे बात करेंगे. ही इज़ अ जर्नलिस्ट. वी विल टॉक टू हिम in regards to the elections that were held yesterday and the outcome of that election, especially in different ridings. So stay with us. We'll come back to you in 2 minutes of time. Do not change this channel. We're coming back. Thank you. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. I'll be honest with you, I would challenge anyone to find better ribs than the ones that I just had. Grillados, the ribs are unmatched. Food was amazing. I think the poutine was amazing. Like 5 stars, easy. 5 on 5. Amazing food. Amazing food. Yeah. Honestly, the ribs were off the chain, man. You have to eat your ribs with the hands. That's the only way to get the best experience. But so far, the ribs have been absolutely amazing. The chicken was good. I mean, it was amazing actually. I mean, I'm running out of words to describe the chicken, how good it was actually. So I'm just gonna say it was very delicious. I would recommend this to everybody. I mean, it's me. I can't tell you how many times I've been back and over again. Guys, if you haven't been, it's the new restaurant in town, Grillados Mississauga. So don't miss out. See you soon.
amazing. The ambiance is great. The food is amazing. The staff are just great. Easily 11 out of 10. 11 out of 10. 11 out of 10, yeah. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम की नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। अभी हमारे साथ बॉनी क्रॉम्बी थी और हम थोड़ा सा उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे जो उनकी कल विक्ट्री स्पीच थी, उस हवाले से कुछ जो मिसिसागा में इश्यूज़ हैं घर के हवाले से, लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से, पुलिसिंग के हवाले से। सो यू हर्ड हर पर्सपेक्टिव। आई विल गेट हर ऑन द शो ऑन द नेक्स्ट कमिंग डेज इन द स्टूडियोज़, ताकि वी कैन टेक योर लाइव कॉल्स एंड वी कैन आस्क द क्वेश्चंस व्हेन शी इज़ हियर इन पर्सन। अभी हमारे साथ राना सुहेल साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अखबार निकालते हैं आपके शहर में, टोरंटो में। एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट रहे हैं पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी आप उनको देखते रहते हैं, उनको सुनते भी रहते हैं। हमारे शोज़ में तो ख़ास तौर पे उनको आप बहुत सुनते हैं, तो मैंने आज उनको दोबारा दावत दी है। आपके सबसे पहले तो आपके टाइम का शुक्रिया सर राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको तमाम अज़ीज़ को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। सर सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं ख़ास तौर पे इलेक्शंस के तरफ जाऊं, एक जो अरशद शरीफ साहब जिनको शहीद कर दिया गया और पूरा सोशल मीडिया इस हवाले से भरा हुआ है, पाकिस्तान के न्यूज़ 2 दिन से इस पे चल रहे हैं। मैंने आज अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स में थोड़ी सी बात भी की है इस हवाले से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इनसाइट, आप क्योंकि अखबार निकालते हैं, आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में जब ये इस तरह की रिपोर्टिंग्स होती हैं और एक जर्नलिस्ट जब काम कर रहा होता है तो उस पर कितना प्रेशर होता है कि उसको मुल्क से भागना पड़ जाए और उसके बाद उसको किसी तीसरे मुल्क में जाके मार दिया जाए। क्या कहते हैं आप सर? मलिक साहब, ये जिस इशू को आप बात कर रहे हैं जी, सबसे पहले तो ये कि अरशद शरीफ साहब की तो डेथ का बहुत ज्यादा देखो यार, बहुत बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान को। और ये जर्नलिज्म की जो जिसे इंडस्ट्री में कहूँगा, जर्नलिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान हुआ है। जहाँ तक रहा जी प्रेशर की बात, तो अगर प्रेशर की बात हो तो मैं किसी हद तक आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँगा कि जर्नलिस्ट शहर या मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। अगर प्रेशर की वजह से जर्नलिस्ट मुल्क या शहर छोड़ देते हैं तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए। अच्छा। क्योंकि कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा है जिसके ऊपर किसी न किसी तरह का उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक प्रेशर ना हो, तो जो भी आदमी कंप्रोमाइज नहीं करेगा और अपनी खबर पे रेजिस्ट करेगा या अपनी खबर के कंसिस्टेंसी पे रहेगा, उस आदमी को ये सारे प्रेशर्स फेस करना पड़ते हैं। अब ये जो इशू है जी उनकी डेथ का, क्योंकि अभी कोई चीज क्लियर नहीं है, जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इस पर बात इस तरह से नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा जिम्मेदार वगैरह रखना चाहिए, फौरी तौर पर किसी को एक्यूज करार दे देना, क्योंकि मैं नैरोबी में 4-5 बार मुझे जाने का खुद इत्तेफाक हुआ है जी। और मैंने इसका छोटा सा एक राइटअप भी दिया था कि नैरोबी के अंदर तो किसी को भी कोई भी आदमी कुछ कर सकता है, उस मुल्क से ज्यादा और क्या होगा जहाँ पर एक बाकायदा चोर बाजार के नाम से बाजार मशहूर हो जी। तो आपने चोरी की हुई चीजें यहाँ पे मिलती हैं जी आपको जी जी। तो इस हवाले से कि वहाँ पे सारी यूनिफॉर्म या पुलिस एवरीथिंग इज करप्ट ओवर देयर। लेकिन जो इस वक्त साहब का इशू हुआ है ना जी, हाँ, लेकिन जो रियलिटी है राना साहब वो तो ये है कि सिर्फ उनको टारगेट किया गया, उनकी साइड से किया गया, मतलब मुतअद्दिद गोलियां मारी गई। जो कह रहे हैं जी सारे डाउट्स क्रिएट करते हैं कि बाकी 2 बंदे जो साथ को एक ही बुलेट नहीं लगी जी, सिर्फ अरशद शरीफ ही को क्यों लगी? करेक्ट, ठीक है ना, ये सारे चीजें डाउट क्रिएट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि एक इंसानी जान का मामला है और एक मुल्क के वकार का मामला है, इसलिए इस बात को थोड़ा सा इसलिए हम छोड़ना चाहिए कि जब तक इस पर पूरी फेयर रिपोर्ट नहीं आ जाती। नंबर 1 तो मैं जो केन्या की रिपोर्ट है जी, मैं तो उसको मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि केन्या से आप कोई भी फिर आप क्या समझते हैं इसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होगी?
आपको होनी लगता है चाहिए ऐसा? जी, अगर नहीं होगी क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। हमारे मुल्क का शहरी है, उसकी वहां पे डेथ हुई है, अगर कहा जाता है कि ISI ने करवाई है तो ISI का पता चलना चाहिए। अगर हुआ है कि वहां पर रॉबरी की कोशिश में हमारा बंदा मारा गया तो उसकी भी आनी चाहिए सामने। दोनों चीजें हैं सर, इसके अंदर कोई ये नहीं है कि अरशद शरीफ है, वो एक पाकिस्तानी है सर। जी, ये तो जर्नलिज्म का मसला तो बाद में है। क्या हमारे शहरी की जान इतनी है कि जो मर्जी उसको गोली मार के मार दे? इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। अगर आप कहते हैं कि जनाब केनिया की गवर्नमेंट ने फलाना डॉक्यूमेंट भेज दिया, फलानी रिपोर्ट भेज दी है, तो सर केनिया के अंदर आप पैसे दे के वहां के प्राइम मिनिस्टर को, वहां के प्रेसिडेंट को जो मर्जी करवा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा जी, मैं यानी कि अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और बाकी ये रही बात के पाकिस्तान के या फौजी इदारों के खिलाफ बोलते थे, तो पाकिस्तान में अरशद शरीफ साहब से भी ज्यादा बोलने वाले अभी तक बैठे हुए हैं। अगर आप उनके नाम भी बता दूंगा, क्योंकि वो रोजाना बोलते हैं, फौज के खिलाफ बोलते हैं, दूसरे इदारों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं हुआ सर। और मुल्क छोड़ने की बात जो है जी, मुल्कों की क्या वजह है, क्या मजबूरी है, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या मुल्क इसी वजह से छोड़ा गया था। हाँ, ये बात जरूर है कि वो नवाज शरीफ लोगों के खिलाफ एक स्टोरी पे काम कर रहे थे, कोई फिल्म ला रहे थे, फिल्म बना रहे थे, फिर शक व शुबा तो सब पे जाता है ना जी। अब तो इन लोगों पे भी जाएगा क्योंकि इनके खिलाफ मूवी बन रही थी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि वो जिस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे वो कोई एक वजह बन सकती है इस सवाल? नहीं, देखिए ना, जब इस तरह का कोई हैपन होता है तो सारे आपको एंगल देखने पड़ते हैं, किसी एंगल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सारे एंगल पे वर्क करना चाहिए। और सिर्फ ISI को सामने रख के बाकी कोई एंगल को खाली छोड़ दे, ये कोई नहीं, ये दानिशमंदी नहीं है। सारे एंगल्स पे इनकी रिसर्च होनी चाहिए सर, तो हुआ क्या है। चले, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उनके दर्जात को बुलंद करें और उनकी बेगम को और बच्चों को, उनकी वालदा को इस अजीम सदमे को बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत भी दे। अजीब फैमिली है जी, वो पिछले दिनों बाप बेटा, अब ये भाई है, पूरी फैमिली जो है उसको मेल ही को नहीं, वो एक छोटा सा बच्चा है अरशद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो कल इलेक्शन हुए हैं, उस हवाले से थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव कैसा रहा है इलेक्शन को देखने के बाद? जो रिजल्ट्स आए हैं वो कितने ओवरवेलमिंग हैं? आप क्या समझते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी जो कैंडिडेट्स थे वो कहाँ खड़े हैं? इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। चलो, हमारे कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस का मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मलिक साहब से जीती हैं, और मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं अपनी थोड़ा सा वो कह सकता हूँ कि बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते होंगे कि असमा मलिक कौन है, कहाँ से हैं, कैसे लड़ी हैं। ठीक है ना, ये चीज स्कूल ट्रस्टी की सीट जीती है या काउंसिलर की सीट जीती है वो जी? आसमा मलिक जो हैं वो टोरंटो से काउंसिलर की सीट जीती हैं जी। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि असमा मलिक है कौन है, कहाँ से है, क्या करती है, जो जीती है टोरंटो के अंदर, टोरंटो डाउनटाउन में। हाँ जी। जहाँ पर ये नहीं हम कह सकते कि वहाँ पाकिस्तानी ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा है, बस पढ़ाना के इलाके से जीती है, जो कि ज्यादातर चाइनीज का इलाका कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ से हम एक चीज जो है वो कैलकुलेशन के जरिए अगर समझना चाहें हमारे आने वाले कैंडिडेट्स, तो वो ये देखें वहाँ पर ना मुस्लिम आबादी पे वो लड़ी है, ना पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर लड़ी है। हत्ता कि उन्हें पता भी नहीं। इसकी एक और मिसाल, एक और शख्स है खलीद रशीद साहब, जो मिसिसॉगा से MP हुए थे, MPP। अच्छा। यकीन कीजिए मलिक साहब के जब वो इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद तक लोगों को पता नहीं था कि खलीद रशीद पाकिस्तानी। जी जी, That's true. जी, नहीं पता था उन्होंने, नहीं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं ली, किसी की सपोर्ट नहीं ली उन्होंने, इस चीज को कैश ही नहीं करवाया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान का मुस्लिम हूँ। उन्होंने अपने जो वर्क है ना जी, सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे आने वाले कैंडिडेट हैं या आने वाले कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ इस बात को केस स्टडी करें, ये केस स्टडी बना इसको, तो जो नए आए हैं कैंडिडेट, जो नए जीते हैं, वो क्यों जीते हैं, किस वजह से जीते हैं, आखिर उनके क्या था जो जीते वो इलेक्शन। तो उनको केस स्टडी बना के तो अपनी प्रेपरेशन करें। ये कोई नहीं $100 डाला और इलेक्शन पे खड़े हो गए। जी जी जी। अच्छा, आपने देखा कि मिल्टन से वहाँ पर चौधरी साहब भी वार्ड 4 के कैंडिडेट थे और समीरा
अली भी थी, तो समीरा अली वहाँ से जीत गई हैं। जी समीरा अली जीती हैं जी, वहाँ से समीरा अली जीती हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन जीशान साहब हार गए अपनी सीट, जो कि रीजनल काउंसिलर थे, वो मेयर की सीट लड़ने जा रहे थे गॉर्डन ग्रैंड्स के खिलाफ। तो वो अब काउंसिल से भी बाहर हो गए हैं, वो तो अपनी सीट भी हार गए हैं। लेकिन देखिए जी, सबसे पहली बात है कि अपसेट बहुत कम हुए हैं, जो अपसेट है जी वो बहुत कम हुए, सिवाय एक दो जगह के, और अपसेट कहीं नहीं हुए। ज्यादातर जो इनकम्बेंट्स हैं वही री इलेक्ट हो गए। ठीक है जी, इनकम्बेंट यहाँ पे आए। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से आपने सवाल किया था, स्मेरा मलिक साहबा के हवाले किया था या असमा साहबा के हवाले से किया था, तो सर इनका वर्क देखे कितना है, इन्होंने कब स्टार्ट किया हुआ है। यही नहीं कि इस इलेक्शन में ये सामने आ गई, नहीं, इन्होंने बहुत पहले से वर्क स्टार्ट किया हुआ है। इसी तरह बाकी लोग भी सामने आना चाहते हैं, लड़े, इलेक्शन लड़ना चाहिए। मसलन जीशान हमीद ने बड़ा अच्छा कंटेस्ट किया, बहुत अच्छा कंटेस्ट किया वहाँ पर। अच्छा, आपको कुछ पता होगा कितने वोट्स लिए हैं उन्होंने मिल्टन में? सर मेरा ख्याल है कोई 11-1200 का डिफरेंस है सिर्फ इनका। अच्छा, फिर तो अच्छा टफ मुकाबला दिया। और एक वो आदमी जिसकी 15वीं टर्म हो, 15वीं या 14वीं या 15वीं टर्म हो, जी गॉर्डन उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना। देखिए जीशान हमीद ने भी ऐसे नहीं सीधा इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कब से प्रेपरेशन शुरू की हुई है, कब से वो चले आ रहे हैं। जी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्म इज जीशान हमीद टर्म। जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, या जिस तरह वो जा रहे हैं, तो बात करने का यह मकसद है कि हमारी कम्युनिटी को यहाँ से लर्न करना चाहिए, यहाँ से बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। तो किन चीजों को यहाँ के लोग जो पर्सनली, ये जो इलेक्शन होता है काउंसलर का, ये पर्सनल कांटेक्ट का होता है सर, जी इंटरेक्शन का होता है, ये पार्टी का नहीं होता कि पार्टी पॉलिसी पे वोट दे दिए। अच्छा, ये बताइएगा कि एजेक्स के अंदर अजहर खान भी थे और अरशद अवान भी थे, उनकी क्या इंफॉर्मेशन रही वहां पर? नहीं सर, इनको देखिए जहाँ पर तो इनका अपना क्लैश हुआ ना, वो इनका वोट अपना डिवाइड हुआ है ना वोट। अच्छा, वो तो वीकनेस है जी, उसके ऊपर तो बात करने की मेरा ख्याल फायदा ही को नहीं है। और देखिए जिस तरह से जहाँ पर भी दो दोस्त या दो भाई भाई, इसलिए दो मुख्तलिफ राइडिंग से खड़े हुए थे ना। जी एक ही कंट्री से अगर आप सामने आ जाए फिर आपका वोट तो डिवाइड होगा। और जो अगर पाकिस्तानी का वोट है वो 10 वोट पे नहीं लेना चाहिए, सिर्फ उसी पे बैंक करके इनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो वो दोनों अपनी सीटें हार गए हैं, अजहर खान भी और अरशद अवान भी। जी। अच्छा। एक सीट और भी हारे हैं जो उस्मान खालिद की वजह, खालिद उस्मान साहब। अच्छा, हाँ जी। वहां से कौन जीता उनकी सीट से? नए इलेक्शन लड़े वहां पर उस्मान खालिद साहब, तो वहां पे भी हबीब साहब लड़े थे, वो भी सीट आप हारे हैं। और जो मिसिसागा का अपसेट है वो रॉन स्टार का है, नो डाउट। बाकी जो ब्रैम्पटन में ये पैट्रिक ब्राउन ने इन्होंने जीतना था, वो जीते हैं। मेरा ख्याल अब तो उनका हैवी मैंडेट होगा। जी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन एक और बात है, ये ध्यान में रखिए, जो तीनों शहर ना आपके तीनों, मिसिसागा, ब्रैम्पटन और मिल्टन, इनके अपने अपने प्रॉब्लम है। अगला इलेक्शन इन इश्यूज पे होगा। मैं अभी सब बता रहा हूँ कि अगला इलेक्शन किन इश्यूज पे होगा। मिल्टन के अंदर जो अभी सबसे ज्यादा हुआ है, रिजेंटमेंट हुई है जी मौजूदा मेयर के खिलाफ जो अभी जीते हैं। वो कह रहे हैं ये पूरे का पूरा शहर इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, हर जगह वेयर हाउस की दीवारें बना दी, हर जगह वेयर हाउस की दीवारें बना दी, सिटी की खूबसूरती खत्म कर दी गई। ये इनका इशू था जिसको पर निशान को वोट मिला। चलिए सर, जो ब्रैम्पटन के अंदर इलेक्शन इशू आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स अकोमोडेशन का। बिल्कुल ठीक है। ब्रैम्पटन में नेक्स्ट इलेक्शन में ये इशू होगा, तो बुलाते जा रहे हैं। जी 1.4 मिलियन इमिग्रेंट्स ये लाना चाह रहे हैं। कोई अकोमोडेशन नहीं है, तो एरिया है ही कौन नहीं जी। ये ब्रैम्पटन का प्रॉब्लम नेक्स्ट इलेक्शन में आएगा। सही। और जो और जो मिसिसागा का है, वो मिसिसागा को जो बोनी कॉमी साहब ने वैसे भी कहा है और उनका अनाउंसमेंट भी है कि वो पील रीजन से मिसिसागा को अलग करेंगे। तो इश्यूज के ऊपर इलेक्शन होता है, कम्युनिटीज के ऊपर इलेक्शन नहीं होते। आई सी। ठीक, बहुत शुक्रिया रानो भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, वंस अगेन। जीतने वाला को बहुत मुबारक जी, और जो नहीं जीत सके वो अपना होमवर्क करें। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की नशरियात, और हमारे साथ राना सुहेल, और हमने थोड़ी सी उनसे बात की। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है voiceoftorontotv@gmail.com। फेसबुक पे हम लाइव हैं, यूट्यूब पे लाइव हैं,
और हमारे स्टूडियोज़ की लाइन का नंबर है 9056704114 और botmedia.ca हमारी जो है वो वेबसाइट का एड्रेस है। वी आर लुकिंग फॉर फ्यू मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न और इसके हवाले से हमारा सोशल मीडिया के ऊपर एक फ्लायर भी चल रहा है। अगर आप उर्दू, पंजाबी, हिंदी, अरबिक कोई भी ज़बान बोलते हैं तो आप प्लीज़ हमसे आप रब्ता करें प्रोग्राम के बाद 9059654786 के ऊपर 9059654786 और यहाँ आप अपना CV हमें आप अपना रेज्यूमे अपना भेज दीजिए voiceoftoronto.tv@gmail.com के ऊपर। नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक क्या बल्कि फ्राइडे वाले दिन जो हमारा प्रोग्राम होगा प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक या 8 बजे, उसके अंदर वी विल हैव फ्यू गेस्ट इन द स्टूडियोज़ और क्योंकि आज सब बिज़ी हैं तो कोशिश हमने की कि कुछ लोगों से बात हो जाए। 2-4 मैसेजेस आए कि वो कुछ लोग जो हैं अभी टाइड अप हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बात नहीं कर पा रहे, बट फ्राइडे को इंशाल्लाह उन सब से हम बात करेंगे और उनका पर्सपेक्टिव जो है वो ज़रूर आपके लिए लेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, ज़िंदगी और सेहत वफा की। तो इंशाल्लाह I'll see you on Friday on Prime Time with Anjum Malik. Bye bye. Thank you.